The title of presentation you may have seen on the screen. It's development of instrumentation using. Actually, we are applying some open source like Python for railway track monitoring, and it is part of one of the some KPIs we have been given under the National Center of Robotics Automation under that umbrella, and I have to acknowledge the technical support for this presentation and some of the research work to my research associate Ali Akbar Shah from that NCRA lab. Also, I am grateful to, of course, the OSS team, Tahir Chaudhary Saab, Babar Zahoor Saab, Salim Rafiq Saab, for giving me this opportunity to share my thoughts, my little bit research, just tip of iceberg. So we move towards the outline. I don't go to through the outline. Of course, we'll be going through those slides quickly. So I will only say a few things like I have added here humble beginning and my university. So definitely, let's see. I read a book of Malcolm Gladwell, The Story of Success. तो उसमें यह है कि आप जहाँ जिस इलाके से हैं उसको कभी भी भूल नहीं सकते। जिस इलाके से आप हैं, तो मैंने अपना वो थर जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ हम दख्तों के नीचे पढ़ते थे और हमारे जो घर होते थे ऊँटों पे और ट्रक्स पे ट्रेवल करते थे, और नाउ इट इज बीइंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ दी ब्लैक गोल्ड और कोल, एवरीवन नोज अबाउट दैट। उस पे हम आगे आएंगे थोड़े से। Author is being transformed, already added 660 megawatt power plant generation to national grid. You can see all our heads of state, past, present, and the different leaders, they have traveled there. You can see Thar has got now airport, females are driving trucks, and one of the coal mine pit is also there. This is one of the power plant inauguration at there. I also visited along with Vice Chancellor of Quest. You can see in the picture. It will be unfair. I think most of you know about Jamshoro Education City. 50,000 altogether student faculties are there. 3 major institutions: Mehran University, Sindh University, Liaquat Medical University, which is name of our former Prime Minister, and the Cadet College Petaro. They all are on the this right bank of the River Indus. At Jamshoro, it has got some iconic building, e-resource center on the right corner at the top, IT building, IT enclave where I got my office, and the main admin building, the entrance, and the Auric enclave. So now coming to why we selected this area, Pakistan Railway. We are going through the dawn and most of those newspaper, and if you see the timeline of those accidents, more than 100 accidents occurred in 2019, and most of them due to derailment of the trains. So basically, then we thought it's better to see further what available in the literature, and there was a very latest paper written by someone from Ireland, Malik Jaffrin, and he also mentioned that majority of train accidents worldwide also happen due to track failures. So we did some survey and done some earlier work that what is the track condition in Pakistan. And what we witnessed is because of the excessive heat and harsh weather conditions, and most of the tracks, they have surpassed their service life. So they get deformation, and they are really prone to break. So here we are losing assets as well as human lives. So and already mentioned, these most of those derailments is due to, of course, lack of interest as well in track conditioning monitoring. There is no state of the art or automation being used,
You may have seen the trolleys, you manual trolleys, two people sit in the front, two back, and some people, they are pushing and they go and they manually inspect. Because we don't have expensive monitoring equipment, so we thought to develop low cost smart instrumentation. Quickly, I will review those existing measurement techniques, the equipment available. This is one of the major equipment. It works on Excel-based acceleration methodology, and it is one of the best to check the current status of the railway track, but it's very, very expensive. You can imagine the cost, and running for 1800 or 2000 kilometers long track and monitoring regularly again is a big task. There is another one, IRT, we call infrared thermography. It is handheld tool, but the most of time this tool is being used for identifying gaps in the track joints. And then there is the ultrasonic, which actually finds the internal properties of material. That equipment is not that expensive, but again, you have to go manually and check, and checking to just only I'm talking about the main line, which is Karachi to Peshawar. One can imagine how long it has to take. The very new emerging technique is coming up, is called fiber break testing. That is very most recent innovation. It's working on principles of refractive index. This is being employed in one of the British Rail. China has also applied this technique as well, but we don't have those development tools here. So we thought to use the image processing technique to complement actually, or to get near results or low cost solution, like a fiber break testing for identifying the track damage, because doing image processing is much easier nowadays. So now let me share with you, these are the thematic centers, research centers established by HEC, of course, with the support of Planning Commission. 13 centers are there under NCRA. Our one is called Conditioning Monitoring Lab. I've got all those centers here, 11 titles, but two centers are being shared, so altogether 13 centers. Our one is scope is to develop predictive maintenance prototype solution for railway infrastructure conditioning monitoring. Another team is also working to identify the problems with the railway rolling component conditioning monitoring, which is like rolling components like the engine and bogies and all those things. So they are out of scope at the moment in the present presentation. So already I mentioned the need of development of low-cost autonomous track recording vehicle, because just to develop low-cost, even we are thinking to have based on solar system, because we have 95%, I mean 360 days sun, and you can mostly need track monitoring at daytime. So we thought to develop a prototype which would be more handy, more portable, and it could find the track damage like fiber break grating method. So developing such instrument, we thought which type of tools we should use. In the past, we also use MATLAB for image processing, LabVIEW, Proteus, and then came into mind, since for some time, that better Python is better. And the reason I put question mark here, why? Because we missed one of the band wagon as well. Here comes actually in 2012, we developed one of the facial tracking instrumentation algorithm. And when we thought to patent it, they said no, the license we use, software we use is not licensed one, that MATLAB is not there. So we can publish our results, but it cannot go for patent. So let me show you little demo about that one. Let me try if it works, that if it plays. It's very short video. It's a facial track instrumentation algorithm developed by even
undergraduate students. So he is also associated with me as a research associate in this NCRA lab as well. So whatever movement of those facials, they are reflecting at the uh, LEDs, because he has used Raspberry Pi. Already Professor Kaka Khail introduced and Tahir Chaudhary Saab mentioned about that Raspberry Pi and its application. So it was giving good accuracy and good results of that facial tracking being reflected at it's been 2-3 more seconds, I think. I cannot stop it because otherwise then my presentation gets hanged. So you have to bear with me few more seconds. So it's directly reflecting the movement there. So, but as I said, very similar to this prototype, a matching prototype, we saw a new product. You definitely could guess Microsoft Connect, and that was really having similar features. And but we only published paper. It has been cited by 10 actually researcher. That is an IEEE Explore. I presented that paper in Azerbaijan. They invited me as a keynote speaker. And then we move towards this development of instrumentation. We have been talking for this particular presentation. It's again a small prototype, going for to rail and testing there is a bit difficult. We will review actually this prototype, which they only allow us for very short time on real tracks on which trains are going on. So when there is a gap of 2 hours, 3 hours, so we take our prototype there. So due to those difficulties, now we are expecting to have some auxiliary or some supporting small track in the university as a prototype testing purpose. So let me go through the design material of this small vehicle, its locomotive mechanism, and the use of special 3 algorithms: Kanye detection and use of power spectral density and wavelet transform. तो हम डिजाइन मटेरियल की जो बात करेंगे, मजे की बात यह है कि हम उसके व्हील्स के लिए गए तो हमें उन्होंने बताया कि जो व्हील आपको हम 3D प्रिंटर से बना के देंगे, ये कोई 28,000 एक व्हील की कास्ट आएगी। हम अपने कारपेंटर के पास गए और रेलवे वालों से जब बात की, उन्होंने कहा वुडन व्हील अगर आप बना सकते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो हमारे ट्रैक के साथ जो सिग्नल्स जाते हैं, जो हमारी पावर लाइन कम्युनिकेशन है, उसको भी ये शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करेगी। तो हमें 2 बेनिफिट हो गए। तो हमने वो एक जो इसकी कॉनेसिटी होती है कि बाहर के साइड पे थोड़ी सी विड्थ कम होती है, अंदर ज्यादा होती है, अंदर की साइड कम होती है। मैं उस डिजाइन पैरामीटर्स में नहीं जाऊंगा, वो एक पूरा अगेन एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है। तो हमने वुडन व्हील डिजाइन करवाए और उसको विदाउट डिस्टर्बिंग इंटायर रेलवे सिग्नलिंग नेटवर्क वो ट्रॉली रेडी की। और ये उसमें अच्छा, उसमें एक और एडवांटेज था कि इसमें वुडन से जो वाइब्रेशन भी थी ना, हमने एक और भी हैंड हेल्ड, मैं आगे दिखाऊंगा, हमने ट्रॉली डिजाइन की थी बहुत पोर्टेबल, उसमें थोड़ी हमें वाइब्रेशन आ रही थी, वो हमने 3D प्रिंटर से बनवाया था, उसके व्हील्स बनवाए थे। अच्छा, तो इसकी रिजल्ट्स और भी हमें कुछ बेहतर लगी, और एज मैंने मेंशन किया कि इसकी स्टैंडर्ड कॉनिसिटी जो होती है वो हमने बिल्कुल रेलवे की उस वही वाली उसको 3D पे डिजाइन की, और ये कारपेंटर ने हमें बना के दी। ऑफ कोर्स उसने अपने लेटेस्ट टूल्स यूज किए। सो दी सिलेक्टेड पैरामीटर्स, ये वो मैंने बात कर ली मेरे ख्याल में। और ये हमने डायमेंशन कुछ छोटे रखे हैं, हमने फुल जो व्हील है रेलवे का उसके नहीं रखे हैं, क्योंकि ये हम एक प्रोटोटाइप टेस्ट करने जा रहे थे। तो अब हम बात करेंगे कि लोकोमोटिव मैकेनिज्म जो वो इंजन कैसे उस पर चलता है, और हमने कैमरा कैसे लगाई हैं, और हमारी प्रोसेसिंग सारी रियल टाइम में कैसे हो रही है। सो लेट्स सी दी वर्किंग ऑफ ऑटोनॉमस व्हीकल। हमने
इसके जो 2 व्हील थे उनको मोटराइज किए और 2 व्हील्स उनको नॉर्मल सपोर्ट पर्पस के लिए रखा। और हम कराची शेरशाह में गए और वहां से हमने ये डीसी गियर्ड मोटर 24 वोल्ट्स 2 एम्पियर वाली बहुत चीप 4-4 हजार रुपए की मेरे ख्याल में हमें मिली। और उनको हमने कनेक्ट किया रिचार्जेबल बैटरी जो हमें 3 घंटे तक टेस्टिंग के लिए टाइम दे रही थी। और हमने उसको कनेक्ट किया हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए। और पूरा आईओटी बेस्ड मैकेनिज्म डेवलप किया। और वी यूज्ड हियर कम्स द ओपन सोर्स ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म जो थिंग्स स्पीक जो इसका ओपन सोर्स टूल है एपीआई है वो हमने यूज किया। सो वी विल सी द रिजल्ट्स हमने यहाँ क्या किया है कि गूगल मैप डेवलपर प्लेटफॉर्म भी यूज किया है और गूगल मैप डेवलपर एपीआई यूज की है। क्योंकि ये जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाती है तो हमारा जो कैनिएज डिटेक्शन एल्गोरिथम है वो लोकेट करता है कि कहीं पे स्क्वाड्स और फ्रॉग्स ये कहलाते हैं, उसमें जो ट्रैक्स में जो छोटे से खड्डे होते हैं उसको। तो जब वो आइडेंटिफाई करता है तो हम इस ये गूगल मैप की जो ऐप यूज करते हैं पाइथन की, तो ये इसी ऐप से वो वापस लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेता है कि और वहां हम दोबारा वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं कि डैमेज कितना है, डैमेज की इंटेंसिटी क्या है, ये थोड़ा सा हम दोनों देखेंगे। सो कमिंग टू द डैमेज डिटेक्शन एल्गोरिथम to analyze the fault we have used 3 algorithm कैनिएज डिटेक्शन एल्गोरिथम। ये क्या करता है, ये सरफेस फॉल्ट पे सिर्फ स्क्वाड्स और जो टर्न आउट उसके फ्रॉक्स जो और ज्यादा खड्डे होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। फिर हम एक पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यूज करते हैं रियल टाइम में ताकि वो हमें उसके थ्रेशोल्ड सेट है कि यहाँ पे वो डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो सेकंड लेवल हम एक ऑथेंटिकेशन करते हैं। थर्ड लेवल जो हम चेक करते हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्म से, उससे ये चेक होता है कि ये इसकी सीवियरिटी क्या है। तो मैं क्विकली उन तीनों ये तो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है। व्हाट वी डू वी गेट लाइव जो वीडियो कैप्चरिंग है, जैसे ट्रैक पे हमारी वो autonomous vehicle चलती है, we capture the real data and then it is of course converted into frames and then to grayscale we apply lineage analysis और फिर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अप्लाई करते हैं कि पीएसडी कहलाती है कि हमारा वो थ्रेशोल्ड लेवल है या नहीं। अगर नहीं है, कोई डैमेज डिटेक्ट नहीं हुआ, तो ट्रॉली तो वैसे ही कंटिन्यूस जा रही है लेकिन वो कोई स्टोर नहीं करेगी उस लोकेशन को। तो उसके बाद जब वो डिटेक्ट हो जाता है दोबारा आगे चलती जाएगी। वेरी अभी तो बिल्कुल 2 किलोमीटर पर आवर है लेकिन हम स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये प्रोटोटाइप है। हम मेनली अपना एल्गोरिथम चेक कर रहे हैं। तो डैमेज जैसे ही डिटेक्ट होता है तो हम उसके ना ये जीपीएस कोऑर्डिनेट स्टोर कर लेता है जो हमने गूगल उसकी ऐप जो यूज की है। और फिर वापस जब ट्रॉली आती है तब उसको वो वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करती है कि इस लोकेशन की डेटा लेके वो देखती है कि ये डैमेज कितना है, इंटेंसिटी डैमेज की क्या है। So this is the algorithm. I don't know, maybe I run out of time. This is very standard algorithm. They are available in the books everywhere. कोई भी एज डिटेक्ट करने के लिए बहुत लाइट वेट इमेज प्रोसेसिंग है एज कंपेयर टू कई टेक्निक्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडियंट फिल्टर्स और इस तरह की। लेकिन ये जो है वो बहुत आपका इसमें कम से कम प्रोसेसिंग आपको चाहिए एज डिटेक्शन करने के लिए विद ऑलमोस्ट जीरो डिलेज। एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ द एल्गोरिथम जो हमने पूरा इसको प्रोसेस करते हैं same image or converting or applying the algorithm and we get finally lineage processing image and then we apply wavelet transformation as मैंने दोबारा बताया कि ये to have 3 step track damage verification और दूसरा efficiency of the technique और the
इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज। तो इसलिए वेवलेट ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई किया है। उसका अगेन ये टेक्निकल मेथड है, कैसे हम डिकम्पोज कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उनको फिल्टर कैसे करते हैं, दैट इज अगेन ऑल मेथड, बट दीज आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जस्ट यू import them and use them, and that is the algorithm उसमें हमने यूज किया। और आप मैं ओनली जो रेड हमारी ब्रिक है उस पे जाऊंगा कि वो डिटेक्ट किया है कितनी इंटेंसिटी जो रेड है दैट इज इंटैक्ट, एंड जो वाइट है वो एक्चुअली डैमेज है। तो दिस इज अगेन मैंने बताया कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्रेशोल्ड से नीचे है तो देयर इज नो ट्रैक डैमेज, और थ्रेशोल्ड को पहुंचता है तो वो ट्रैक डैमेज आइडेंटिफाई होता है, और वेवलेट ट्रांसफॉर्म से फिर हम इंटेंसिटी निकालते हैं जब हमारी व्हीकल वापस जाती है। और यही हमने बहुत अच्छा जर्नल है एनल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटिंग, उसमें इसकी रिजल्ट्स रिसेंटली बहुत रिसेंटली हमने पब्लिश भी किए हैं, उसकी साइटेशन भी हुई है मेरे ख्याल में 4-5 मुझे। भवानी साहब, स्केल स्कैन टूल आता है वो हमने परचेज भी किया, उससे हमने रिजल्ट वैलिडेट भी किए, दे आर 87.9% एक्यूरेट। और ये मैं कंक्लूजन तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक व्यू पॉइंट है कि हम यही समझ रहे हैं कि इट्स लो कॉस्ट, लेकिन इसके कुछ डिफिकल्टीज हैं जिसको हम ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं क्विक ओपन सोर्स बेस्ड जो हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं, एक हमने ड्रोजीनेस डिटेक्टर फॉर रेल ड्राइवर भी डिजाइन किया हुआ है, और ये भी 5-10 सेकंड का होगा मेरे ख्याल में कि ये सामने मेरा ये रिसर्चर बैठा हुआ है और ड्राइवर की जैसे ही आंखें बंद हो जाती हैं तो वो एक बहुत हैवी किस्म का विसल जनरेट होता है। मेरे ख्याल में ये 20 सेकंड का होगा वीडियो या 15 सेकंड का। वंडरफुल जी, इसके जबरदस्त। थोड़ा सा आगे मैं आपको ये बीप अलर्ट ड्राउजीनेस अलर्ट हो गया रियल, ये खुद देखने भी आए हैं रेलवे के, देख भी गए। और हमने हमने एक और पहले हमने एक बहुत छोटा सा ऑटोनोमस ट्रैक रिकॉर्डिंग बार यूज किया, उसमें हमने C++ को यूज किया क्योंकि हम नोड MCU यूनिट यूज कर रहे थे। और यही वाला जो फिजिकल में नेक्स्ट पे जल्दी जाऊंगा ये है, इस पे भी हमने इसमें भी पाइथन ओपन सीवी यूज किया है रिजल्ट्स के लिए, और ये रिजल्ट्स भी पब्लिश हुए हैं एक जर्नल में। और मैं वही कह रहा हूँ, नो कंक्लूजन द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, हमने एक छोटा सा स्टेप लिया है, डेजर्ट से निकले हैं, अभी थोड़ा सा ऑटोमेशन में आ गए हैं, लेकिन जर्नी तो काफी लंबी है। विथ एवरीवन सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आई थिंक फॉर लॉन्ग वे। थैंक यू वेरी मच।